Yeah, Okay, sure. okay, You can okay. go. Okay, so good evening, gentlemen. My name is Shashank and I'm here to deliver a lecturate on topic India and Pakistan relation. I had divided my lecture into three sub-parts, in which I will be talking about introduction. Second part, I will be talking about facts and figure. And in third part, I will be talking about conclusion. As we all know, India and Pakistan have cordial relationship since beginning. When the partition of India and Pakistan took place, it is an apathy that a country originated from India's blood is so rebellious against India. Let's talk about India and Pakistan dispute. The major reason behind India Pakistan dispute is the Kashmir issue. Till now, three wars have been fought in 1947, 1965, and in 1999, which is known as Kargil War. In which Pakistan has been defeated rigorously. India also helped Bangladesh in getting its independence from Pakistan, from East Pakistan, in which they captured around 90,000 soldiers of Pakistan army, in which 90,000 soldiers were captured by Indian army. India, as a gesture of sympathy, releases all the soldiers and step its first step to maintain healthy relationship with Pakistan. As India, India always try to maintain good and healthy relationship with Pakistan, but Pakistan is a country like a snake, which feeds its own egg, which cannot be dissociated. India helped Pakistan in many ways, like Kanwar road transportation, and our PM Modi has always tried to talk to Pakistan for various kind of adjustment. But Pakistan always stabbed us. Let's talk about conclusion part. As we all know, to maintain healthy relationship with India, with between India and Pakistan, everyone should have come forward. Majorly, Pakistan should stop terrorism against India, and if they didn't stop it, we have to boycott the Pakistan, and we have many evidence to show Pakistan as a terrorist country. We can say terroristan. World countries should come together so that established government should be formed in Pakistan. So that's all about my lecture. Thank you. Jai Hind. टेररिस्ट था मैं ये वेरी मुझे गुड पता है कहाँ से लिया है ये आवाज नहीं आ अड्डा रही है, आवाज 24/7 नहीं आ रही है। हाँ। मैंने बोला मुझको पता है कहाँ से लिया अड्डा 24/7 के था ना ये What? मैंने भी वहीं से लिखा था What? ये लेक्चरेट जो लिया आपने ये गूगल पे मैंने भी सर्च किया था तो ये अड्डा 24/7 था हाँ, कंफ्यूजन हो या रहा था या या टेररिस्ट या आई हैव सेम टेकन इट वर्ड फ्रॉम से अड्डा डॉट सेम इन। सेम लिखाया क्या दोनों ने? नहीं मेरा अलग है जस्ट मैंने एक पढ़ा एक बार उसको रीड किया था अच्छा किया तुमने सेम नहीं लिखा, वरना गड़बड़ हो जाती ना। कोई दिक्कत तुम नहीं बहुत यार, समझदार हो, मुझे लेक्चर। पता था तुम समझदारी दिखाओगी। Okay, someone you have to start. Okay, Jai Hind, gentlemen. As you know my name, today's topic of my lecturate is But wait. What you had just said? As you know my name. yes, as you know my name. और क्या, तुम नाम तो जानते ही हो ना, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मैं तो सोच रहा था, पता तुम लोगों को सरप्राइज करूं, जब मैं बोलूंगा जय हिंद कैडेट्स, आई एम प्रथमेश चिरंजनी, आई वेलकम यू ऑल ऑन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, ऐसे करके। खैर Okay. कोई बात नहीं, शुरू करते हैं, तुम्हें एडिट करना पड़ेगा Jokes वरना। apart. Yes. Jai Hind, gentlemen. As you know my name, today's topic of my lecturate is Indo-Pak relations. As we all know, India and Pakistan got separated in 1947, and since then, one is the fifth biggest GDP of the world, and other is struggling to get out from the uh, grey list of FATS. We share a border of 3,323 kilometer with Pakistan. We also share similar culture, language, attire, food habits, and agricultural practices. Talking about economic relations, we used to trade approx 1.8 billion dollar with Pakistan in 2018 and 17 and 18. But in August 2019, after the removal of Article 370 from Kashmir, Pakistan completely banned trade with India. But now they are reconsidering the full-scale trade with India because of deteriorating economic conditions of Pakistan. The major exports from India are cotton, nuclear reactor, machineries, and organic chemicals. Major import to India are salts, minerals, fuels, oils, and edible fruits and dry fruits. Now talking about Indus Water Treaty. Indus Water Treaty was signed between India and Pakistan in 1960. According to this treaty,
The all the water of the eastern rivers such as Bias, Rabi, Satluj were allocated to India, and all the water of western rivers like J- J- uh, Ch- uh, Jhelum, Chenab, Jhelum, Satluj, Chenab, Jhelum Indus. Jhelum, and Indus were allocated to Pakistan. Now, if we talk about defense relations, as such, there is no cooperation between India and Pakistan military. As rather, we consider Pakistan as enemy country because we have fought three major wars and one undeclared war against Pakistan, namely Indo-Pak War of 1948, also known as Kashmir War, Indo-Pak War of 1965, and Indo-Pak War of 1971, which is also known as Bangladesh Liberation War. And at the last, there is Indo-Pak War of 1999, which is also known as Kargil War. All the wars were won by India, Indian armed forces, but still we are facing the terrorist activities on the border areas. My next point is terrorism. Pakistan's continuous support to terrorism makes it the worst neighbor. But now India is also ready for every eventuality. The recent surgical strike and airstrike has made the recent surgical strike and airstrike was a tight slap on Pakistan's face of business of terrorism. Now my next point is Kashmir issue. Pakistan's claim on illegal occupation of India over Kashmir is totally baseless. The removal of Article 370 has proved that has made it very clear not only on the national levels but also on the international levels that Kashmir is an integral part of independent India. Let's talk about some other issues between India and Pakistan, and they are Pakistan occupied Kashmir, drug trafficking, smuggling, honey trapping of soldiers, and terrorist activities, terrestrial claims, and China's alignment towards Pakistan, and many more. Uh, at the last, I would say if the Kashmir issue and the terrorist activities between India and Pakistan will be resolved, more than 90% of problems between India and Pakistan between Indo-Pak relations will be resolved. Both Pakistan and India are neighboring countries. And for the betterment of both, Pakistan should leave the path of terrorism and should make friendly relations with India for the peace and growth of both the regions. Pakistan should understand that war is never an option for to resolve any issue because war never brings fruitful issues, as earlier we have seen in the Indo-Pak wars and recently in the war of in the Russia-Ukraine war. India is always ready to for the peace talks, and India supports the prosperity and peace of both the nations. This was all about my lecturate. Jai Hind, gentlemen. क्या हुआ भाई, हंस कह रहे हो? कुछ नहीं. अरे थोड़ा थोड़ा हकला आ रहा था, क्या करूं? Recording देख सोच रहा लेना. था बेस्ट तगड़े से डिलीवर करूं. कुछ करा कोई क्या बात मैंने नहीं उल्टा है, सीधा? नहीं नहीं वो थोड़ा टाइम एक्सीड किया. यू हैव टुक अराउंड 6 मिनट्स टॉकिंग, बट ठीक था. भाई बट 6 मिनट हो गए? कंटेंट बहुत स्पॉट बढ़िया में था. स्टार्ट किया. कंटेंट वॉज हाँ परफेक्ट. बढ़िया बढ़िया. अरे यार मैंने सिर्फ एक ही चीज छोड़ी थी, वो थे वो क्या बोलते 3 समिट्स जो हुए थे, लाहौर समिट, आगरा समिट एंड शिमला समिट. इसके सिवा मैंने सब कुछ लिख दिया था. मैंने एक चीज छोड़ दी. लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. ओके हाँ आशुतोष. हाँ ये सब बात है. आई तो Hello, am I audible, Yes, guys? yes, you are clearly audible to So us. it's my turn, huh? Yes. Okay. Can I start? Yes. Yes. So, okay, Jai Hind. So, for today's lecture, no, topic is already discussed and it's in Pakistan relations. भाई So, I आवाज want नहीं to आ रही भाई, let आवाज you बहुत guys फंस know रही है. about these आशुतोष योर things. वॉइस What? वाज लैगिंग. Hello. यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है यार. नेटवर्क बहुत है प्रॉब्लम है. हेलो. हेलो. अब आ रही है? यस. आ रही हाँ, है? अभी तो क्लियर है एकदम. यस. क्लियरली ऑडिबल है ना एकदम? एकदम मक्खन, क्रिस्टल क्लियर योर ऑडियो. हेलो. योर ऑडियो इज क्रिस्टल क्लियर. Okay. You are Thank sounding like Lata you. Mangeshkar. So can I go now? Yes. Shall I, Of course. shall I start? Yes. Yes. Okay. So Jai Hind, everyone. No, for today's lecturate, the topic has already been decided and it's Indo-Pak relations. So I'm keenly eager to let you guys know about some pros and cons of these topics. So what is, I've divided my topic into
three to four subparts. Now, first is the historical background, then the major dispute, which makes India-Pak relation as a you know like a dispute region for this, and the latest development, and finally I'll conclude it. So, the looking at the historical background, on 18th July 1947, Independence Act was passed by British Parliament, and on 15th of August 1947, India and Pakistan were granted independence from British rule, in which Pakistan was divided into two parts, West Pakistan and East Pakistan. Which East Pakistan is which we all know is as Bangladesh, where the Bengalis live over there, and a border has been decided to in between the two countries in Pakistan, which is the red boundary between India and Pakistan is red clear line. The partition also resulted in respective divisions, including British India and Indian, and also the major the rail and the state Ashutosh, the your audio is not clear. Ashutosh, we are not able to hear you. अरे यार नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है I think Jiya, you have to start. Ashutosh will cover it later. Okay, तो मैं start कर दूँगी. I am clearly audible, है ना? Am I? You are audible, but background noise. Background noise. No, मुझे तो गया क्लास 5 मिनट लगेंगे. Okay, so मैं start कर देती हूँ. Ashutosh, मुझे सुनाई दे रही है. Ashutosh, you can carry on. शुरू करूं मैं फिर से अब आ रही है बात नहीं आ रही है हाँ, बताना अभी आ रही है. आ रही है ठीक है कोई ना सो जय हिंद एवरीवन फॉर already been decided in its Indo-Pak relations. Now I'm keenly eager to let you know guys about these topics. So I have divided my session into four subparts. The first is historical background, then the dispute, then the reason for the dispute, these two countries, and the latest development, and finally I conclude the topic. It July 27, Indian Independence Act was passed by British Parliament, and on 15th of August 1947, India and Pakistan were granted independence from British rule. In which Pakistan was divided into two parts, West Pakistan and East Pakistan. East Pakistan is known as Bangladesh, in which Bengalis live over there. And the boundary between the India and Pakistan is the partition also resulted in respective, including India, and two major things is that the Indian civil services and also the railways. So, and the state J&K had opted to neither join India or Pakistan, but to exist an independent entity. On October 1947, Azad Kashmir forces supported by Pakistan Army attacked and marched towards Srinagar. And the historical background I'll take from the Maharaja Hari Singh point of view. Maharaja Hari Singh, the then ruler of J&K, seeked independent India's help. India deployed its troops to stop the Azad Kashmir forces with the condition that the state of J&K would accede to India. Hence, an instrument of accession has been signed between Pandit Jawaharlal Nehru, the then Prime Minister of our country, and between Raja Hari Singh on 26th of October 1947. An area occupied by Pakistan after that instrument of accession is declared as POK, and by India is Indian occupied Kashmir. Now the Pakistan violated the legality of instrument of accession, which lead to the first Indo-Pak conflict in 1948. The very first Indo-Pak conflict happened in 1948. Now till now there are three major wars which happened between these two countries. Then one of the major wars is the Kargil war. And that creates a major dispute between these two countries. The very two big reasons for dispute between two countries is the J&K border dispute and the terrorism. As per the independent fact, J&K opted to neither join India or Pakistan. So by taking that thing, both the countries wanted to gain that part into their country. So the major border dispute for that country is J&K, and we all are aware about the terrorism we are facing now. Pakistan supports the terrorism to gain to rule the Asian region, and several other countries also taking the what we can say that taking the advantage of that, and they want the Pakistan army or the Pakistani government to support more the terrorism, that
by which they rule over the Asian region, like China is supporting Pakistan over to take over India. Now, the latest development which already been happened are the in 2019 the Article 370 of India's constitution was scrapped off, which gave a special status to J&K, following which the bilateral relations faced a severe blow. And India on Feb 15 to 2019 withdraw most favored nation status to Pakistan. And the major terrorism attacks, which is on the either we'll take the Indian Parliament attack or the Mumbai, the Taj Hotel attack, the Pathankot attack, and recently the Pulwama attack. We all and by taking the latest development of that attacks, we go for the surgical strikes over there, and we have taken already a good revenge over there. But to gain what the major cause to for the neighboring countries, the major reason is to maintain peace and security over there. So if we want to maintain the international peace and security over there, we have to just take off these things, the major reasons of dispute, the terrorism, the attacks, the J&K was a dispute. So at last, in conclusion, I would like to say that the relationship between India and Pakistan is very strained. No, and India Pakistan restoring to all kind of cowardly means to destabilize India. So Pakistan must stop this and try to resolve the issue through bilateral talks, and only then will the Southeast Asian region be stable and prosper. So that's all from my side. Thank you. Great. So now my turn. है ना? अब Yes. background noise के लिए. So Jai Hind everyone, my name is Jiya and today I'm going to deliver a lecture on India and Pakistan relation. As we all know, the relation between India and Pakistan has always been complex. Although both the countries have same geopolitical, cultural and economical links, still their relationship has been plagued by hostility and suspicion. Till From 1947 to till now, there has been 4 wars fought between India and Pakistan. The first was fought in 1963, where there was a failure to produce any agreement, and then after 2 years, that is in 1965, there was another war fought between the neighboring countries. In that, the uh, Tashkent declaration was signed between India and Pakistan, assuring to withdraw their. Sorry. Yeah. The Tashkent declaration was signed between India and Pakistan, assuring that. Guys, sorry. फेल दिया. Yeah, I know मेरे idea. mind disturb कर रहे हैं जाने जाने दे मेरे को. यार. I was saying फेल दिया. Sorry. मैं दोबारा से start करती हूँ. वहीं से start करेंगे. You can start from beginning. Start from beginning. चलो ठीक है. So Jai Hind everyone, my name is Jiya and today I'm going to deliver a lecture on Indian-Pakistan relationship. Indian-Pakistan relation. As we all know, the relationship between both the countries has always been complex, and but although both the countries share same linguistic, geopolitical, economical, and cultural links, still their relation has been plagued by hostility and suspicion, and there has been 4 wars fought between India and Pakistan since 1947 till now. So the first war was fought in 1963. There was a failure to produce an agreement between the countries, and after 2 years, that is in 1965, there was another war fought between the countries. In which the Trashkent, I don't know the right pronunciation. Trashkent declaration was signed between India and Pakistan, assuring that both will withdraw their pre-war lines and will work on maintaining good relations, good economic and diplomatic relations. Then in 1971, there was a third war between the countries, which is also known as the Bangladesh Liberation War, and that resulted in the surrender of 93,000 Pakistani army's personnel and liberating Bangladesh and liberating Bangladesh, and a Shimla agreement was signed in 1972. Then the last war in 1999 was fought, which is also known as Kargil War. In Feb 1919, our
our Prime Minister Atal Bihari Ji Vajpayee went to Lahore and signed the Lahore Declaration for maintaining peace. But in May 1999, the Indian Army observed that there has been the Pakistani army and Mujahideens have been occupied the high altitude post and along the LOC. So, backed by Indian Air Force, the Indian Army fought. The Indian Army fought and won the war. Uh, though there was casualty on both sides, and the war was won by uh, Indian Army, Indian Armed Forces. Pakistan has always supported insurgencies and terrorism because of Kashmir, because they want Kashmir, and they have always tried to supply some weapons and trained fighters, and also a lot of like drug smuggling, honey trapping, etc. And the bilateral trade between the neighboring countries was stopped after the abrogation of Article 370. Uh, Pakistan has also tried to. Pakistan has always supported terror attacks like 26/11, Mumbai attacks, Pathankot airbase attack, and also the Uri attack, and the most recent, that is Pulwama attack. But the Modi government has retaliated it by two major strikes, like that is surgical strike and the air strike, giving Pakistan a strong message that India won't tolerate any terror attacks. So in my there was also there have been also water issues between both the countries regarding that Indus River. Though there was a treaty signed by Pakistan and India regarding this, but the treaty has failed to resolve the issue. Although it hasn't been violated during the 3-4 wars, but it has failed to solve the issue. In my opinion, I think that both the countries' economic condition, I mean financial condition, is not good. So both are developing countries. So war is not a solution to anything, and they must have a peaceful discussion and try to solve the issues. Though India has always tried to solve the issues, but Pakistan has always supported terrorism. So I think Pakistan should stop supporting terrorism, and should join hand with India in the development of the countries. Thank you so much. Welcome, Jay. Mhm. Okay. So, let's just have firstly we हंस have क्यों रहे थे पहले ये बोलो to start pros and मैंने क्या cons. करा था Okay. मेरे लेक्चरेट में हंस क्यों रहे थे भाई मैं नहीं नहीं मेरे नहीं भाई ये जी शशांक मैं परेशान कर देना क्या बताऊं मैं। नहीं 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 इससे पूछ रहा हूँ शशांक से शशांक वर लाफिंग मैं हंसता था कब नहीं तो मेरे लेक्चरेट के बाद मैंने कुछ करा था क्या लेक्चरेट में ऐसा यार आई हैव अ प्रॉब्लम at the end of lecture what? यार लाइक मैं पूछ रहा जब भी हूँ जैसे आपने नोटिस किया होगा, मैंने भी बहुत ट्राई किया, तो मेरे अपनी स्पीड को भी कंट्रोल करके रखा है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में बिल्कुल इतनी स्लो लगी थी, बट मेरे हाथ के जो एक्शंस है ना, लाइक मुझको बहुत आदत है 4 2 ऐसे एक्शन करके बोलने की। वो मेरे साथ भी होता है यार हाँ, तो मैं ये नहीं वाला हाथ जो है ना ऐसे इसको यहाँ पे रखता हूँ इसीलिए मैं ऐसे ऐसे मैं इधर करते रहता हूँ हाँ तो वहाँ लोगों को पे तो दिखता मतलब नहीं है किसी को हैंड करने हैं ना, बट वो मेरे से नहीं होने वाले, मतलब मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा इसमें। मैं बोल रही थी तो तुम बैठे बैठे हाथ ऐसे कर लिया करो अपने। हाँ वही नेक्स्ट टाइम से ऐसे। हाँ सही रहेगा। हाँ अभी से सही है, सीख जाओगे। आदत बन जाएगी भाई तो। ओके शुरू यार पता है अगर वैसे पीछे कर भी लेना थोड़ी देर बाद भूल जाऊंगा मैं फिर मैं हाँ हाथ आगे अपना बात करके तो चलो we will like warn you no we will what will we can say अरे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं, चलो Yes. शशांक के बताते हैं। just discuss pros and cons. हाँ तो मैं बताऊँ I will मुझसे स्टार्ट करोगे ओके स्टार्ट विद और क्या, तो मैंने तो मुझसे स्टार्ट स्टार्ट करा कर लो था यार, मैं लास्ट में दिया है, मेरी रिसेंट चीज फटाफट रिव्यू कर दो। तुम्हें ना हाँ हमारा Okay. कंटेंट काफी सही था मुझे तो कोई कमी उतनी लगी नहीं वही थोड़ी बहुत जो कमियां जहाँ पे मतलब अटक जाते हो कहीं पे बस वही स्पीड हाँ ठीक यार थी पर यार कंटेंट एक तो इतना था ये कि मतलब ताशकंद ताशकंद पता नहीं क्या था मेरे दिमाग में, वो वर्ड ही नहीं, वो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा, ताशकंद कोई ताशकंद बात चेंज कर बोलो इसको। नहीं ये बोलूँ मैं स्पीड मतलब नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा थी पर मतलब तुम्हारा कंटेंट नहीं इतना था मैंने कि वो मेंटेन टाइम किया में है खत्म हो सीरियसली, गया हाँ अगर ओरिजिनल में मैं वीडियो रिकॉर्ड करती ना, ओरिजिनल देखते ना यू विल बी लाफिंग कि क्या बोल रही है रुचि, बट आई नहीं हैव पर कंट्रोल है। तुमने हाँ एग्जैक्ट 5 मिनट में खत्म करा वो सही चीज थी एग्जैक्ट 5 मिनट ज्यादा नहीं है यार, 2.5 मिनट होते हैं फॉर लेक्चर। वही तो 2.5 मिनट नहीं होते 2.5 भी 3 लगा लो, 2.5 चलो से 3 तक भी 3 चल 3 से जाएगा। ज्यादा नहीं होता। हाँ उससे ज्यादा नहीं ना, वही है कि यार थोड़ा वो इसलिए मैंने तो अभी और भी चीजें बोलनी थी, बट मैंने कंट्रोल करके खत्म कर दिया। बस 3 मिनट ही बोलना होता है मेरे को लगा 4 मिनट तो कम से कम बोलना ही होता है नो नो नो
2.5 में कर दो तो बेटर रहता है, 2.5 या फिर ढाई मतलब मिनट देखो मैं ये 2.5 से बोलते फिर वो तो ज्यादा तो ही मेरे लगता है। हाँ लेक्चरेट देखना, इतने टू छोटे छोटे तैयार करूंगा ना मैं, 6 मिनट का मैं पूरा भी यार, नॉलेज, कोई टू बात नेक्स्ट थर्टी टाइम नहीं। से टू मैं फोर्टी शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट करके लाऊंगी। इतना ही मेरा देखा है लेक्चरेट भाई। मैं मुझे खुद से रियलाइज हो कोई पॉइंट नहीं उसमें, कोई पॉइंट्स नहीं थे, कोई पॉइंट नहीं थे वही लेक्चरेट मैं में। बोलने वाला था, तुम्हारे में बोलूंगा मैं, खैर। ओके जिया ओके का तो सही था, जिया बस जी वही एक दो प्रॉब्लम थी, मैंने बता दी। आई विल मेंशन वन पॉइंट। तुमने जो बोला यू हैड सेड लाइक इन दिस वाटर that project that contract was shown failure, that was a failure, हाँ but हाँ India have fought India and Pakistan have fought 3 war after independence, but the treaty was always successful. वो कोई फेलियर नहीं था कभी भी आज नहीं, तक। मैंने मेंशन किया इसलिए मैंने बोला कि ट्रीटी को भी वायलेट नहीं किया गया, बट इशू रिजॉल्व नहीं कर पाई, वो जो पापानी वाला इशू है वो वायलेट किसी भाई ने भी नहीं कहाँ किया। रिजॉल्व तो है, कहाँ पे इन अभी द लड़ाई हुई although वापस से, रिवर वाटर को in the लेके three वापस से wars दोबारा लड़ाई नहीं the हुई। वो treaty कभी has not been, वो हाँ ट्रीटी हाँ हमेशा बट मैं सक्सेसफुल रही है, वो कभी वायलेशन हुआ ही नहीं उस ट्रीटी का। मतलब तुमने मेंशन किया वायलेशन तो मैंने कहा ही, वायलेशन नहीं बट हुआ, मैंने ये कहा है कि वो ढंग से इशू सॉल्व नहीं कर पा but the रही, ना treaty एक्चुअली प्रॉब्लम treaty was नहीं, always इशू successful सॉल्व। because like after wars have been fought। चलो कोई बात नहीं, मैं इस पे रिसर्च कर लूंगी थोड़ा सा, मतलब कब हाँ वीडियो वगैरह देख लूंगी, मुझको भी आइडिया है, मैं तो मुझे ये चीज अच्छे से पता है क्योंकि बिकॉज आई हैड डिलीवर लेक्चर ऑन इन दिस वाटर ट्रीटी ऑन आवर academy, so that's why I remember this point एनकेसी। still। Yes okay। ये मेजर कल्ची कौन है? Major Khalsi, it is a fraud, they are running a fraud academy। नहीं नहीं, No, he कल्ची is कल्ची नहीं, asking कल्ची who कौन is Major Kalsi. I He don't is know, asking I about the don't know, major, I not don't know, about the academy. I don't हाँ, know, मैंने I कभी सुना hadn't नहीं नाम researched इनका। it, I हाँ hadn't searched about it। मैं कर लेती हूँ। Okay, so तो आई थिंक that ओके, one सो point आशुतोष I रिव्यू was अच्छा telling हो about गया। you and everything was good। Okay, that's all। क्या क्या? Everything was good and that's all. दैट्स ऑल। ओके, इसमें थोड़ा मुझको लगा कि मैं थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट थी लास्ट टाइम से, है ना? मुझको हाँ लगा पता नहीं। Confident तो तुम थी। confidence good। Ashutosh, you can just say। स्माइल भी करी थी यार मैं। Yes, है yes, you स्माइल were भी What, कर polite. what? रिव्यू अबाउट माय लेक्चर 8। Zero about you, na? सुना था ना? Not Confidence about her lecturate. बोलो बोलो। and a confidence was good, but na the speed, what I think is that too quick. You just delivered your Yeah. lecture, too fastly. Yes, you have started like you actually, That is why honestly, I also mentioned. Ashutosh, nice mistake। क्या? mistake। उसके तुम्हारे नहीं, तुम्हारे तो है ही नहीं। uh, अरे यार रोमांस। आशुतोष Ashutosh, टर्न ऑफ your योर voice वीडियो। is not clear. Ashutosh, you You can are turn not off your audible. video। okay, हाँ अब बोलिए। ये मैं ये कह रहा हूँ कि the way to deliver your lecture, you have just delivered it very quickly, very fastly. Just I'm not able to, I'm not able to understand your 2 to 3 points. Have some patience, यार। भले तुम कम बोलो लेकिन 3 मिनट में बोलो, समझ में तो आए। पता लगे थोड़ी कि तुम अपना सारा कंटेंट बोलना चाहती हो 3 मिनट में शुरू किया, खत्म कर दिया उधर जाके। कैन आई Have some स्पीक? You don't patience, need to be yeah। you don't need to be so anxious. Ashutosh is like Yeah, this is my habit to speak faster. नहीं honestly That is यार, my same, that is my Go ahead, also, continue. and that is same habit I पर have। तुम and that's लेक्चरेट में why सही बोलते हो। where you have to improve. Why ये चीज़ Improve. मतलब I had हाँ, improved Just ना। improve as fast as you can, as early as you can. यार I have मैंने tried आज to बात करते करने record वक्त नहीं जोर किया। से बोलता है, पर लेक्चरेट में सही बोलता है। यार I have tried to record my videos and मतलब मैंने वो ट्राई किया, थोड़ा सा कम हुआ है मतलब रिकॉर्डिंग में देखना, हाँ थोड़ा सा कम हुआ, पर फिर भी फास्ट था। मैंने बोला ना, नहीं वो नॉर्मल से तो ज्यादा ही था, एकदम नॉर्मल से नहीं नहीं था। बोल सकते ना कि मैं जल्दी बोलती हूँ और आराम से एकदम से धीरे धीरे बोल लेती हूँ, टाइम लगता है यार नहीं, उससे इसलिए। होता ही है ना कि मतलब सारे पॉइंट समझ में नहीं आते सामने वाले को, बस ये बात मुझको होती है। पता है, ये मुझको बहुत लोगों ने बोला है कि बहुत तेज बोलती है, मतलब जल्दी जल्दी। कोई नहीं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा और मुझे ये क्या। लगा कि तुमने जितना ना how much content you have prepared, you just want to deliver all of that. Whatever your time you take, how fast it is, just let it be. You want to deliver all your content. That's what I personally feel. ना तुमने जितना बनाया सोचते थे बस 3 मिनट में मुझे करना ही करना है anyhow. नहीं, इस इंटेंशन तो से नहीं just दिया ना होगा उसने, नहीं क्योंकि वो मैं पिछले was मतलब not वो this यार, उसकी पिछली बार प्रॉब्लम है मैंने वो। लेक्चर दिया है मतलब वो थोड़ा धीरे था, इस बार पता नहीं नहीं क्यों था।
नहीं, और सारे लेक्चर अभी तक अच्छे थे, आज यही सबसे बड़ी डिमेरिट ये थी। थोड़ा ज्यादा फास्ट था। कॉन्फिडेंस वाज गुड, नरेशन, योर फ्लुएंसी वाज गुड and everything was all right. बस Just ये keep it up as your plus point, and just sort of the points which all in your demerits. नहीं, बात ये होती है ना, जब कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, तो फिर हम जैसे होते हैं वही बाहर आता है तुरंत, तो थोड़ा सा वो फास्ट हो गया इस वजह से, थोड़ी मुझे में ऐसा लगता हाँ है। वो ये वो नेचुरल वाला वो बाहर आ गया मेरा वो Yeah, I understand that, but okay, no problem. So from the next time you have to improve, na? शॉर्ट ऑफ पॉइंट्स। Yes. हाँ मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स नहीं मेंशन किए ना, वो और भी मैंने अभी बोल दिया। तुमने इतना जल्दी बोला, मतलब हमसे अगर बोला जाए समराइज कर जिया का लेक्चर, तो हम नहीं कर पाएंगे, बात ये है। हाँ Exactly. ये बात है बस। बाकी मतलब सुनते समय तो अच्छा लग रहा था। And guys, I have one point to tell you guys that Yes. हाँ don't need to when guys just introduce yourself, don't need to take your name. वहाँ पे उनको just number ये वॉइस तो just number ठीक है। हेलो यस यस क्या अब बोलते सही है। हैं? हाँ मैं कह रहा हूँ कि देखो तुम लोगों के चेस्ट नंबर्स वहाँ पे इसीलिए दिए जाते हैं कि अपने नाम ना लो। sorry, All of मैंने you note three किया। guys started your lecture. Just started your lecture like I am Shashank Gautam, I am Aman Pandey, I am Jiya. I don't need to take your name ना, because तुमको चेस्ट नंबर इसलिए देना कि तुम अपने नाम ना लो, because you must have to make habit like तुम अपने किसी सीनियर को बुलाओगे, थोड़ी बुलाओगे ए अमन, ऐसे बोलोगे। You have to just I mean भाई जो जिस नहीं honestly to be very honest, yes, you have to take the post offer, जैसे captain Aman, captain or anything. मेजर जनरल। Just you have to take. That's why they Yeah. want to make a habit Got of having chest numbers. Got it. So you don't My need to chest number take the name as before starting your lecture. Number is 22. Hey, don't need if you have no chest number, don't need to just start like that. Jai Hind everyone, and for today's lecture, I did this. Don't need to take your name. मुझको सबसे अच्छे पार्ट Okay. लिखने में नाम भी नहीं लगता है, उसको भी हटा दिया। अभी चेस नंबर 14 ओके, और जो भी चेस नंबर 29 22 I am chest number 17. उसे बुलाना चाहिए आई थिंक चेस नंबर से, चेस नंबर 17 24 29 है ना? Yes, yes. ठीक And what I think that we must have to make habit of taking chest numbers. या Taking the वही name as chest numbers. हम स्टार्टिंग में वही करते थे, तो we'll स्टार्टिंग में वही करते थे, हाँ, फिर तो किसी ने हाँ, तो करना किसी चाहिए ने यार। डिस्टर्ब अब किया। ये कर दो यार, ये कर दो। Aman chest number 22 and 24 Aman is 22 ओके ओके and Jiya yours, 14 14 Ashutosh yours 29 29 जनवरी ना 29 Ashutosh? हाँ and मेरा और योर हाँ, 17 29 जनवरी। and your Jiya your 14 दिसंबर मतलब 14 14 दिसंबर। Oh, so you are also Oh, born your in birthday is December. coming. उसके बाद आपका, उसके बाद शशांक का, नहीं शशांक का 17 फेब को ना, मुझे आनंद को पता था। उसका 17 जुलाई को होता है। जुलाई को, उन्होंने तो फरवरी में बोला था अनंत ने, अरे उसको वो ऊपर बताया अनंत था। पागल है, वो ऐसे ही झूठ बोल देता है। ओके अनंत का टेस्ट नंबर क्या है? Okay, guys, jokes apart. ओके Can we move to other pros and cons? Na? या Yes, yes. सो फाइनली सॉरी Firstly, mine. Very good. ओके ओके पहले मेरे बताओ तो। Ashutosh, I will क्या say that सबसे पहले डिमेरिट बताओ, सबसे गंदा क्या था? you just today explained some points a lot and you Yes. again You were stretching some points and Yes, some points were very small. and you just went to history again. lot of details. They took too much time to explain history. Yeah, Okay. And that's all about. बाकी pros and cons तो सब बता देंगे। बाकी हाँ तो हाँ मैं बताती हूँ। तो कौन लाइक ये कि तो वही यार हम सबका इशू है कि टाइम वाला थोड़ा स्टक हो जाते बीच में, बट आई थिंक वो नेटवर्क का था, बट आप नहीं स्टक हुए थे। खैर द अदर पॉइंट इज दैट लाइक वही वो जो हमने थोड़ा कुछ पॉइंट्स की बहुत ही डिटेल में मुझे ना खाली कर दी थी, और मतलब कुछ का बिल्कुल ही मेंशन कर दिया, थोड़ा मेंशन करते हो, थोड़ा एक्सप्लेन करते तो चलता, मतलब मुझको ये लगा। बाकी सब मुझको ये लगा लाइक फ्लुएंसी वाज देयर एंड योर मतलब कॉन्फिडेंस वाज गुड, और मैं फेस एक्सप्रेशन वगैरह तो देखी नहीं, बट हाँ क्योंकि वो वीडियो का वो था ना। Okay. 22 So I think you were repeating a word, you know, again and again.
Yeah. Because You na, should leave I this got habit stuck of at some repeating. points. I got stuck at some point because I just don't want to know. Just मैं क्या सोचा था कि मैं बीच में रुकूं ना, इसलिए हाँ तो मैं यू नो बोल के एक सेकंड का करने की पॉज मिल टेंडेंसी जाता आ है, गई या है आई मेरे गॉट अंदर। यू, या दैट वाज नाइस। बस हाँ बस। पर वो पता है But यू that नो I was have ना to बार really बार take ऐसा off that हाँ tendency of mine. हाँ it will show ना कि लोग कनेक्ट कर रहे you know guys थोड़ा सा चलेगा, but वो अमाउंट बढ़ा देगा इलेक्ट्रिसिटी की। आई नो सॉरी अमाउंट क्या बोलते हैं यार, बाकी मतलब हम लोग हाँ हाँ टाइम लिमिट से I ज्यादा will ही था improve तुम्हारा that. भी, सबका टाइम लिमिट से ज्यादा था शशांक को छोड़ के। वही 5 ऑलमोस्ट, हाँ शशांक का सही था। शशांक का 3 मिनट में ही खत्म हो गया I था। was on time today. नहीं मैंने पहले कहा था ना, मैंने प्रिपेयर कुछ नहीं किया, ना फ्रेम किया ना कुछ नहीं, बस मैं सोचा 9 बजे शुरू करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी, मैंने सोचा 8:30 से ही करते हैं, Yeah. इसलिए मैंने बस बोल दिया। So move सो on to नेक्स्ट Aman. जल्दी रिव्यू करते हैं ना, फिर उसके बाद हम लोग वो करेंगे Move on to आगे थोड़ा Aman. सा। हाँ हाँ So Aman, I hadn't found any mistake on your lecture today. या साहब हैं? Yes. I just like you just explained every point and not stressed too much. You just on. Yeah, everything was good today. I had it for या written. आई टू एग्री यार, मुझको भी सब कुछ चला, लाइक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वो लो था, मतलब वी कैन नेग्लेक्ट इट, वो बाकी सब ठीक था, और वो जो भी बोला मेजर पॉइंट्स जो थे जो हम लोग ने नहीं कवर किए वो भी आपने किए थे कवर, है ना। मैं बोलता रहा हूँ, और मुझे जितनी चीजें टाइम मिली लिमिट मैंने नहीं था, सब लिख दी। हाँ टाइम लिमिट टाइम इशू था, लिमिट इसलिए ज्यादा हो गई। सबसे लंबा शायद आप ही का लेक्चर था, Yeah, क्योंकि yeah, सारे yeah. include थे। You हाँ had you तब भी too मैंने much. सोचा छोड़ा हुआ है ये मैंने आगे उसमें लिखा हुआ था, मैंने वही पेंड कर दिया, मैं सोचा बहुत हो रहा है, मैं टाइम भी देख रहा आप लोग था। सोच के आए 10 मिनट का लेक्चर दूंगा, वो उसमें वो रख दिया। अभी आगरा समिट के बारे में बताना यार हाँ बचा हुआ था। एक चीज यार, कंक्लूजन शुड बी ऑफ लाइक 2 to 3 लाइंस, आपने तो ना 5-6 लाइन का कंक्लूजन कर दिया। मैंने इसलिए कंक्लूजन बोला ही नहीं, मुझे पता था मैं कंक्लूजन बोलूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं इसलिए बोला ऐसा है बोला कि इन माय यार, ओपिनियन। यू सेड सो आई वांट टू कंक्लूड दैट हमने ना पाकिस्तान ना और ना उसको ऐसे करना बोला ही चाहिए। नहीं मैंने, ऐसा लिखा भी नहीं, मैं दिखा सकता हूँ, मैंने ऐसा बोला है, लिखा कसम से बोला इन है माय ये ओपिनियन। नहीं, अच्छा माय माय रिकॉर्डिंग देख ओपिनियन, लेना। Hello. भाई ओपिनियन कंक्लूजन जो भी वो हाँ बहुत मैं. लंबा खींचते थोड़ा सा आप 2 दिन पॉइंट को रिपीट किया था, लाइक पाकिस्तान शुड स्टॉप टेररिज्म, पाकिस्तान शुड स्टॉप टेररिज्म, जो भी था, 3-4 चीज नहीं मैंने मतलब देखो रिपीट सबसे पहले मेंशन करा कि नहीं अगर नहीं कश्मीर इशू और टेररिज्म खत्म हो जाएगा तो हाँ 90% प्रॉब्लम्स इंडो पाक रिलेशंस की खत्म हो जाएंगी। उसके बाद मैंने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान अगर टेररिज्म छोड़ देगा तो फ्रेंडली रिलेशन बनाने आसान हो जाएंगे। हाँ और उसके बाद फिर मैंने ऐसा बोला कि मतलब इंडिया जो है वो मतलब हमेशा पीस टॉक्स के बारे में बात करता है और चाहता है दोनों देश के लिए ग्रोथ और हाँ। प्रोस्पेरिटी तो के मुझको लिए। थोड़ा सा ऐसा लगा, बाकी ठीक वो पॉइंट्स तो अच्छे थे उसमें ओपिनियन। कोई नहीं तो अगले लेक्चरेट में और सही होगा। हाँ 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 यार वी हैव टू शॉर्ट, मतलब हमको बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प बोलना चाहिए ना, क्रिस्प Yes, एकदम। yes, yes, हाँ yes. वही। सो Not नाउ explain too शशांक। much. Not like. हम्म Okay, so move on to me. ओके ओके करो स्टार्ट। Just tell me demerits because I know there are not आशुतोष any ने तो कुछ merits. बोला ही नहीं मेरे बारे में, तुम लोगों ने बताओ मतलब क्या ही बोले, But ऐसा करते हो Ashutosh, तुम लोग। आशुतोष कोई नाराजगी नहीं, आशुतोष सॉरी, चेस नंबर 29 से अबाउट चेस नंबर 22। Okay, चेस okay. नंबर 29। Aman, just number यस 22 यस ना? यस यस। Yeah, it was 32 नहीं हो सकता good. है। Just 22 ना? या या Just yeah, it was good. Just keep going like that. थैंक यू Good enough. जेंटलमैन। हो गई तसल्ली? रेस्पेक्ट योर ओपिनियंस मिल एंड गई आई विल तसल्ली? इंप्रूव माई सेल्फ फ्रॉम द नेक्स्ट या लेक्चरेट। Okay, guys. अरे यार मैं एनाकोंडा वाली मूवी देखने लगा था, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं Okay, guys. कॉन्फिडेंट था पहले। Tell me my कोई बात demerits नहीं। because I या know. मैंने ना भी ग्रुप खोला वो देखने के लिए कि लेक्चर के साथ क्या है, मुझे भुवनेश्वर की फोटो दिख गई, इसलिए मैं देखी। सॉरी। सो वहाँ कंटेंट कम था चेस भाई नंबर और 17 फ्रेम्ड भी नहीं था आई सही थिंक से। यू शुड प्रोसीड। व्हाट? उसको बोल रहा था शशांक को, अच्छा अच्छा हाँ योर कंटेंट वाज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई अस Yeah, I agree. एंड इट वाज नॉट फ्रेम्ड वेल हाँ यू नो, या Okay. एंड यू आर अ बिट लेस कॉन्फिडेंट बस। Hmm. Okay. चलो कॉन्फिडेंस और ला सकते हो, बाकी तुमने जो बोला जो जैसे डिलीवर करा वो सही था, Okay. डिलीवर करने का सो नाउ तरीका माय अच्छा टर्न। है। यस सो चेस नंबर 17 आई थिंक यू वर अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, मतलब आपका ध्यान कहीं और था ऐसा लग रहा था,
मतलब you were not interested अब in आप real estate. सामने लेकिन से, तुमने अब जबरदस्ती मोहतरमा आप सामने से ऐसी हरकतें करेंगी तो ध्यान कहाँ जाएगा? जस्ट टेल मी. I'm sorry for that, हाँ. but हाँ, but हंस रहे थे Okay, हम. I agree. I I agree. know मेरी वजह से, but still you should not be distracted. Yeah, ठीक है, that's my और mistake. नेक्स्ट Okay. था कि हाँ वो ये थोड़ा सा वो कुछ पॉइंट्स थे जो नहीं मेंशन किया आपने, और टाइम लिमिट तो वो तो आप कर सकते वीडियो था, मतलब टाइम लिमिट में कमिट खत्म किया, और ओपिनियन का मैंने शायद सुना नहीं ठीक से वो वाला ओपिनियन ओपिनियन बोला था ना, हाँ वो बोला था जब मैंने बोला कि वो हाँ उधर से रिया है 24 से, बट मुझे सही लगा लेक्चर. Sorry for distracting you. No worries. You can. I have to control ना. Of course. हाँ? वाह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. Okay, I know, I agree that that's my mistake. नहीं वो तो चलो ठीक है, जब मैं हरकतें कर रही थी you should be laughing, but the thing is that you were not, मतलब ऐसा तो नहीं कि यार हम कुछ वो कर रहे हैं कुछ, मतलब उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे, लग रहा जबरदस्ती इंडिया पाकिस्तान रिलेशन जो सब आप याद करके आए वो बोल रहे हो ऐसा लग रहा था सीरियसली. Okay. हो सकता है ऐसा ना हो, बट लग तो ऐसे ही रहा था ना. Yeah. I got it. Okay. So how I had delivered it very well. You guys are saying like you delivered it very well. So how जो it? तुमने बोला है उसको That was डिलीवर in करने time का limit. तरीका अच्छा था और टाइम Yeah. लिमिट में था. हाँ, but कंटेंट वो सही नहीं था, हाँ ये कहने का मतलब ये है. That is बोलने not का true. तरीका अच्छा था, That is समझे? not अब okay. हिंदी में ही समझते हो तुम, वो influencer इंग्लिश बोल रही techniques. थी. Hashtag influencer techniques. Deliver So करना chess तो number आता है but content अच्छा. 29, I would request you to give feedback on chess number 17 lecture. हाँ देख Oh रहा hello, है, chess number 29. Hello. गार्गलिंग कर रहा है. Hello, chess number 29. ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोलगेट. Yeah. Tell me my demerits. Your demerits and your Demerits. lecture You are उसकी keenly गलती है. no you are keenly not to know your demerits. Yeah, because I Just know there are ask not for any your merits, merits. yaar. No, ask for merits. If there are, if there are not, just firstly ask for your merits. Be positive, yaar. Yeah, I am It's also positive. communicating, not expected from you chess number बी 17. कोविड पॉजिटिव. So you want your Because demerits. So from my perception, what one. I Okay. yeah Just yeah finish. yeah no, you want your demerits first. No, so from my perception, what I feel is that the very first your start was very bad. Okay. Just wanted ना, तुम चाहते थे क्या, तुम चाहते थे मतलब जो मैंने लिखा है वही मैं बोल दूं, जो तुमने अपने नोटबुक में लिखा है वही मैं बोल दूं, एग्जैक्टली वही, एग्जैक्टली द सेम थिंग यू वांटेड टू स्पीक. दैट्स व्हाई यू गॉट स्टक. हम नोट्स बनाते किस लिए, सिर्फ अपनी चीजों को याद कर लिया. एग्जाम में लिखते तो अपने हिसाब से ना. वही मैं भी करता हूँ. मेन पॉइंट्स मतलब अपने मन से कर लो, एक बार रीड भी कर लेता हूँ उसके आसपास मुझे बोलना you कैसे है, फिर बोलता we खुद से ही have हूँ. to know, उसकी वजह से अटक जाता हूँ. the main point of making notes is only that just recalling all the things, what Main happened, things, yeah. what will happen, what is happening. Okay. And Shashank want to say the same thing which he had written in his copy. That's why he got stuck. Yeah. Actually, The start was very bad. I hadn't The written start was very bad, and the plus point of your lecture is the time limit. Okay, the time limit. Your confidence was a little bit good today than your previous one lecturette. Okay. Next. Like just don't need to say like what you have written and the way you have to speak. Don't need to be so predictable. Okay. 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 That's all. Okay. So we पॉइंट्स had बना लो ना भाई. जैसे सबसे पहले मैंने बनाया था इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बताना, उसके रिलेटेड मैंने फ्लो चार्ट जैसा बना लिया था. फ्लो चार्ट 8-10 बार बना लो, फिर तुम्हें खुद ही याद रहेगा. yes. फिर उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी. Look, शशांक. मुझे यही पता, मतलब मैंने जो वहां पे एसएसएस ने मुझे बताया ये था कि यार देखो हम पॉइंट्स बना लेंगे, उसके बाद बोलना हमें अपने हिसाब से. अगर हाँ, बुक की वही. भाषा बोलेंगे ना तो उनको भी लगेगा कि रट के आया है. सही बात है. कुछ तो अच्छा उससे क्या डिलीवर होगा, करने के बाद भी वो अच्छा नहीं अगर लगेगा. हाँ अगर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. Okay. I will improve it from next time. Just make points to remember all the things, not to the way you have to deliver. और एक बात ये Deliver भी है ना as भाई per your way, as per you want. कि वहाँ पे तुमको पूरा फ्रेम करके लिखने का मौका नहीं मिलेगा. जल्दी तुम पॉइंट्स लिखोगे और फिर ही बोलोगे, तो उसी हिसाब से ट्राई करो ना. नहीं, वहां पे लिखने का मौका मिलेगा ही नहीं.
वहां पे लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा। पॉइंट्स वहां पे नहीं। तुम्हारा अगला वाला जाएगा, वहां पे तुम्हारा अगला वाला जाएगा, तुमको 4 वो चिट मिल जाएगी, उसमें तो तुम सिर्फ पॉइंट वहां पे रिकॉल कर पाओगे, डिलीवर वहां पे तुमको खुद ही करना है, वहां पे लिखने का मौका वही ही नहीं तो मिलेगा। वही ना। वही मैं कह रहा हूँ, वहां पे बस लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो जस्ट यू हैव बस टू, तुम्हें वही करना है। आपके पास बस सोचने का मौका रहेगा कि बोलो। हाँ बस हाँ सोचने का वो ही। पॉइंट्स देखो रिमेम्बर 2.5 करो मिनट पे, कि बस देखो उसी के बारे में बोलो। जैसे तुम्हारे पहले चेस्ट नंबर वाला चला गया, ठीक, वो 3 मिनट का उसका होगा, है ना, वो तीन जैसे जैसे ही वो आएगा और अपनी चिट जाओ, जब अगले वाले जो तुमसे पहले डे रहा है वहां पे जब उसके 2.5 मिनट हो जाएंगे तो एक बिल आ जाएगा, वो बिल आ जाएगा कि जो बोल रहा है उसके 2.5 मिनट हो गए हैं, और जो बाहर खड़ा है तैयार कर रहा है उसको बताया जाएगा 2.5 मिनट हो गए, अपनी इलेक्शन देने के लिए रेडी रहो। ये और वो होता है। 2.5 मिनट पे वो बजर या फिर वो जो ना हैमर वगैरह वो कुछ मतलब इंडिकेट करते हैं कि यू हाँ हैव भाई बैठ जाएगा, वो इसलिए जाएगा, इसलिए वजह से 2.5 मिनट आप दोगे, अब देन यू हैव टू गो फॉर द कंक्लूजन, what you think and what will the जस्ट कंक्लूड। next procedure for all the topic which has, हाँ बस just conclusion for the last 30 seconds। ओके, या तो मतलब ऐसा होता है, तो वहाँ पे तुम्हें लिखने का भी नहीं मौका मिलेगा, तुम सिर्फ अपने पॉइंट्स रिकॉल करने का, इसलिए तो टॉपिक तैयार करके जाने पड़ता है। टॉपिक तैयार करने के यार 3 मिनट 2.5 मिनट तुम अपना इंट्रोडक्शन देने में ही एक मिनट निकाल दोगे। Ashutosh, you can turn off your video. या ओके, तो 4 टॉपिक्स होते हैं, उसमें एक एकदम हाई टॉपिक होता है और 2 एवरेज लेवल के होते हैं, और जो फोर्थ वाला होता है वो लो लेवल का। उसमें क्या होता है, फेवरेट प्लेयर, माय फेवरेट रोल, माय फेवरेट फैक्ट एंड माय फेवरेट बुक एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब चौथे में तो बोल ही लोगे, बट डोंट नीड टू बी ना कि मुझे हाई लेवल टॉपिक पे ही बोलना है तभी मेरा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके नजरों में, ऐसा कुछ नहीं है। इफ यू वांट टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लो लेवल टॉपिक, गो फॉर इट, बस जस्ट डिलीवर फ्लॉलेसली। या What you उसको feel, ऐसे just go बोलो, for that। उसको ऐसे बोलो कि सुनने वाले को मजा आ जाए। सामने वाला हाँ तुम्हारा मतलब वही माथा कहना, चूम ले उसको ये ना बस। लगे कि चीजें रट के आया है, मतलब उसको ये ना लगे ना कि चीजें रट के आया है, बस वहाँ पे भाप निकाल रहा है, जबरदस्ती बुलाया गया इधर, ऐसा कुछ ना लगे उसको। हाँ गॉट इट। मेरा तो नहीं लगता, मतलब वही मैं कह तो रहा हूँ नहीं मैं, याद कर रहा, इफ मैंने यू याद वांट टू डिलीवर, इसमें नहीं उसको नहीं मैंने नोट्स अरे नहीं यार, बनाए आज। हाँ मैंने तो नोट्स करके बनाए, कभी मैं नहीं हो रहा था बोल देती। the the lecture you have delivered today na, in our comparison was very damn good, was damn good। थैंक्स। Pure and Aman, you Okay, both had delivered very well. हाँ नहीं yeah, अच्छा था Aman has सीरियसली। improved a lot from वो the यार previous one। Aman has improved a lot, very lot। I और will अमन को मुझे say, पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे यार I will सीरियसली। say that according to me, today's best lecture is of Aman only. या आई Oh डू my एग्री। हाँ God, हाँ वही thank कहा, you gentlemen। अमन कैसे लगेगा, just the way he's going to the smile on his face when he's delivering या his lecture is बट just too जस्ट amazing। हाँ इफ यू गिव जस्ट कॉन्फिडेंस ना, जस्ट अ बिट कॉन्फिडेंस, मतलब वो हाँ बिल्कुल मतलब परफेक्टली इसका चल रहा है। एनर्जेटिक भी कम रहता है, enthusiasm भी हाँ कम रहता है, वही वही too lazy, या little bit यू of लुक लाइक। laziness। हाँ नींद आ रही है थोड़ी थोड़ी वैसे लग रहा था, बट इट वाज हाँ रियली हाँ गुड यार। You have researched very well and written nice points. Thank you gentlemen and And my gentle research Jiya। is just I just got into Google and searched Indo-Pak relation, and the first article was of Adda 247, and I just learned that and just हाँ वो पता चल रहा था लिखा हुआ। so that's all for today. Jai Hind. जय हिंद। जय हिंद to all।